इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ एनपीएस गर्व का अनुभव भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. And to discuss the stories, we are joined in by senior journalist Prakash Chawla. धन्यवाद निश्चित और आपका बहुत स्वागत है प्रकाश चावला जी। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें आपके लिए लेकर आए हैं और हम उन पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं मेरे सहयोगी निश्चित कुमार। The headlines: Benchmark equity indices tumble over 2% amid negative global sentiments. Sensex plunges 1,628 points. Nifty finishes at 21,572. Fitch rating says India poised to remain one of the fastest growing economies in the world for the next few years. And production-linked incentive schemes witness over 1.03 lakh crore rupees of investment till November 2023. नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजार 2% से ज्यादा लुढ़के। सेंसेक्स 1,628 अंक टूटा, निफ्टी 21,572 पर बंद। रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि भारत अगले कुछ वर्षों में भी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। और पीएलआई स्कीम यानी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना में नवंबर 2023 तक 1.03 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश। और आज की बड़ी खबर, नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख शेयर बाजार आज 2% से अधिक गिर गए। बैंकिंग, धातु और तेल शेयरों में भारी बिकवाली के बाद सेंसेक्स आज 1,600 अंक से अधिक लुढ़क गया। सेंसेक्स में पिछले 1.5 साल से अधिक समय में फेड रिजर्व के आक्रामक रुख और यील्ड में उछाल ने दुनिया भर में निवेशकों की धारणाओं पर असर डाला, जिसके कारण ये बड़ी गिरावट आई। सेंसेक्स 1,628 अंक या 2.23% गिरकर 71,501 पर बंद हुआ और निफ्टी भी 460 अंक यानी 2.10% की गिरावट के साथ 21,572 पर बंद हुआ। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स में 1.1% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.9% की गिरावट आई। The benchmark equity indices tumbled over 2% today amid negative global sentiments. Sensex nosedived over 1,600 points today, marking its biggest single-day slide in more than 1.5 years, following an intense sell-off in banking, metal, and oil shares. The hawkish Fed and the yield spike dented investor sentiment across the globe, resulting in a widespread fall. The Sensex plunged 1,628 points or 2.23% to close at 71,501, and the Nifty also declined by 460 points or 2.10% to finish at 21,572. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index declined 1.1% and the small cap index fell 0.9%. In the Sensex, which is a pack of 30 companies, shares of 6 companies appreciated while those of 24 companies declined. HDFC Bank plunged 8.5% and Tata Steel tumbled 4.1%. Kotak Bank declined 3.7%, Axis Bank fell 3.2% and ICICI Bank slipped 2.9%. On the other hand, HCL Tech gained 1.3%, TCS and Infosys both rose 0.6%. And in the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, all 20 sectors logged losses.
Bankex sector tumbled 4%, financial services declined 3.8%, and metal sector lost 2.9%. Commodities index fell 2.3%, and telecommunications sector slipped 1.9%. The overall market breadth was negative as the shares of 2,510 companies declined, while those of 1,301 appreciated. A total of 89 companies remained unchanged. Prakash, in Delhi, with the plummeting mercury, the Sensex also nosedived today, and it was really a bloodbath on the streets today. So what, besides, of course, we know the HDFC Bank and all, they contributed in the fall, but besides this, what are the other major factors would you attribute in this sensational fall today? Well, as you rightly pointed out in your introductory remarks, it's got more to do with the global factors. And before I come to the global factors, let me tell you, the kind of market journey that we have seen over the last 1 or 2 months was leading to a situation where it required some kind of a cause for this kind of a correction. So I would take it as a correction. Okay. There is no panic. So I am not very sure whether it will be right to call it a bloodbath, because I've been reading this morning, bloodbath at 71,000 Sensex, and the kind of valuations some of the companies enjoy. Absolutely. And if you said in your introductory remarks that it's gone down by about 2%. 2 odd percent, yeah. To 2%. Yeah. Now 2% I don't think should be called as a bloodbath. Yes, it's a major correction. I would take it as a major correction, and the factors which led to the fall has got more. It's a global pattern, if you see. And as I said earlier, that market was looking for an excuse to correct itself, All right. which is healthy in a way. Okay. And the excuse came from the global markets. And the excuses or the reasons, so to speak, the increasing tension in West Asia. Correct. And then higher valuation, but higher valuation should be true for all the markets. And there was a less than expected growth in China's GDP, which led to fall in some of the Asian markets in the morning. So the trend setting in the morning itself was not exciting enough. Morning shows the day, yeah. Yes. Yeah. So, and this all led to, and as you referred yourself in your remarks, that the expectation that the Fed would continue dropping rates, was muted today, because the indication was to the contrary. Absolutely. So these led to a situation where, in a way, the stage was set for this kind of thing, and these factors combined together for this fall. That's how I would call it. The yield spike, again, is one of the contributing factors, I would say, in the US, because that is one thing which is on the radar of the FPIs mostly, and that is how they pull out or push in the money in the Indian markets. And with the high yields, expected and of the current value, this is also one of the major contributing factors as far as I think that is another one. Well, when it comes to yields, you've got direct relationship with the inflation. So the people thought that we are done with the inflation correction path that the US central bank had taken, and followed by several other central banks. But then that expectation, maybe market took it too far, and then they thought that the central banks all over the world are done with the rate hike cycle, but today's indication from the Fed governor, not the chair, but the governor, indicated to the contrary, that it is not a clear picture, and so that's how the yield went up, indicating that the inflation challenge still remains, and that sent a kind of a negative signal. Let's see how it opens tomorrow. The US futures, and they do indicate that the drop might continue. Okay. Yes. So we are slipping into a quick break, but do stay tuned, because we have lots coming up on the other side. मानसिक शांति के साथ साथ एनपीएस जीवन में संतुष्टि भी लाता है।
18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। और फिर विराम के बाद आपका स्वागत है। प्रकाश जी, जब शेयर बाजार अच्छा रहता है, निवेशक उत्साह में रहते हैं, अचानक 1600 अंक गिर जाता है, ऐसे में आप हम जो हमारे श्रोता हैं जो निवेश करना चाहते हैं, उनको आप किन संयम की बात करेंगे या किस तरह का उन्हें आप सुझाव देंगे? जो हिंदुस्तानी मार्केट है अपनी, बड़ी अच्छी बात ये है, जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है, जिनको आप रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई वो उत्साहित होते हैं, भाई कई बार जी परेशान भी हो जाते। फॉर्चुनेटली हमारा रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा मैच्योर हो चुका है काफ़ी। अब देखो, आप डीमेट अकाउंट खोलो, रिकॉर्ड नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट, जी हाँ, तो वो भी चीज़ों को समझने लगे हैं और वो भी विदेशी मार्केट्स के ऊपर भी पैनी नज़र रखते हैं। ये अच्छी बात है। इसलिए जो आज हुआ, मार्केट 2% गिरा, सेंसेक्स 1600 पॉइंट से ऊपर कुछ गिरा, इसी तरह से 450 प्लस पॉइंट से निफ्टी गिरा, हाँ। और कुछ एक शेयर्स में भारी वो आई। तो मुझे लगता नहीं कोई पैनिक गया है रिटेल इन्वेस्टर्स में। हो सकता है जो एफएनओ करते हो, जो रोज़मर्रा की ट्रेडिंग करते हो, उनको थोड़ी सी दिक्कत आई हो, लेकिन जो समझदार इन्वेस्टर है, जो समझता है, और मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर है, अब वो साइड वो नहीं है, वो फ्रिंज नहीं है, वो एक मेन पार्ट है हमारे मार्केट की। जो डेप्थ है उसका मेन कंपोनेंट है। 3 कंपोनेंट होते हैं, एफआईआईज, डीआईआईज और रिटेल। अब रिटेल का जो अच्छा खासा इसमें वेटेज है और इसकी काफ़ी दबदबा है हमारी मार्केट में। हमारा रिटेल इन्वेस्टर इतनी जल्दी घबराएगा नहीं अभी। जी हाँ। और हम देखते हैं, अगर पिछले साल की बात करें तो देखिए, जो मिड कैप और जो स्मॉल कैप है उसमें 3 गुना लोगों को फायदा नजर आया लार्ज कैप के बदले। और आज भी हम देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट काफ़ी कम है, मतलब इनके मुकाबले। मेरे को लगता है ये इस लिहाज से मार्केट को सेग्रीगेट करना, बांटना ठीक नहीं है। जी, मार्केट को बांटना है, खास तौर पे अगर जो हमारे रिटेल सेगमेंट के लोग हमारे श्रोता सुनते हैं, उनको ये नज़र रखनी चाहिए भाई आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, वहाँ उस कंपनी का प्रमोटर कौन है, उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कोई वो क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अगर देखेगा तो, और काफ़ी फ़ायदा भी तो हुआ। आफ्टर ऑल ये कितने महीनों तक, काफ़ी अरसे तक मार्केट टिकी रही थी 60 और 65 हज़ार सेंसेस के बीच में। जी। अब 65 के ऊपर से जब चलना शुरू हुआ तो एकदम से तेज़ी पकड़ी। जी हाँ। अब वो तेज़ी जब पकड़ती है तो एक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हर्ड मेंटेलिटी, वो आ जाती है। कई बार आदमी सोचता है कि एक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि मोमेंटम चेजिंग करते हैं हम लोग, और उसमें कई बार आदमी ट्रैप भी हो जाता है। तो लेकिन हमारा, जैसे मैंने बोला, रिटेल इन्वेस्टर इतना जल्दी घबराना, उसको लगता है अंडरटोन जो है हिंदुस्तानी इकोनॉमी की वो सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये सब अच्छा हो जाएगा मार्केट? नहीं, आने वाले दिनों में अगर आप चाहेंगे, मुझसे पूछें कि कल कैसा होगा, जी, कहना मुश्किल है। लेकिन ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि हमारी मार्केट हो सकता है कि थोड़ी कंसोलिडेट करे, थोड़ी एक जगह पे टिकी जाए बैंड में, वो अच्छी बात भी होगी। क्योंकि देखो, गैम्बलिंग प्रवृत्ति मार्केट में नहीं आनी चाहिए, वो किसी के लिए अच्छी बात नहीं है, ना तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए, ना हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अच्छी बात है। तो अगर ये मार्केट कंसोलिडेट करती है, अपने तरीके से धीरे धीरे चलती है, और उसका रिलेशन हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स के साथ रहता है, कैसी हमारी अर्निंग्स है, ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी इम्पॉर्टेंट है, उसमें नज़र रखनी पड़ती है। अब मिडिल ईस्ट में जैसे जिक्र किया, वहाँ थोड़ी टेंशन बढ़ गई है पिछले 2 दिनों में, तो ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे। और लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है, आई विल नॉट से कि इंसुलेट हो गई है, लेकिन संभली हुई है। कोई पैनिक अंडरटोन जिसको बोलते हैं, जो सेंटिमेंट है, वो इंटैक्ट है। Prakash ji, you mentioned some time back that the Indian investors, especially the retail investors, they have become so mature and so prudent that they are not that fly-by-night kind of operators now. One more factor I would like to point in here is the results season of the companies.
the third quarter results, which are beginning to roll out now, like HDFC happened and then Infosys happened and TCS happened a couple of days back. So what advice would you give to our listeners to look in, to have a gauge, to have a closer look at the results of the companies before investing in those companies? Because that's a major factor which actually factors in when we look at the trajectory of the market movement and the momentum. See, 2-3. To put the technicalities into a simple format, I would advise one or two things to the investors. Corporate earnings are very important. Every quarter there is earning. So whichever sector you take it, aviation, you take it IT, you take it banking, every company would be posting its quarterly results. So, and it's not very difficult to understand now. All that you need to do as a retail investor is that as compared to Y on Y or year on year, year on year for this period, whether the company's sales is going up, whether the profit is going up, or whether the company is reducing its debt. If it's reducing its debt, and there is something called price to PE ratio. PE, yeah. Price to earning ratio. Yes. Now, company may be very well, but if its valuation is sky high. Absolutely. And you are buying at a huge valuation. True. But mind you, don't go by the ticket size of the share price. At times, the share ticket size might look big, but the P ratio is very tempting. So there are, for instance, take paper industry today. The P ratio of some of the best performing papers company is mouth-watering even today. Okay. But it's a neglected sector. There's sometimes, there is a people, because the frenzy takes around a particular segment, True. So everybody starts chasing. If you see some of the consumption companies, or the P ratio is mind-boggling, is mad. It's not really prudent to invest at that kind of a valuation. Company is good, results are good, but it's like buying a piece of land. If you buy a piece of land at a exact price, how do you expect it? So the investor should be prudent that way. Also, he should, after all, it is his stake, his hard-earned money, and he should look after the savings that have gone into the stock. You make a very important point when you mention about the price to earning ratio. Now, for the benefit of our listeners, we would like to know what's the ambient kind of PE ratio one should look at when investing in a company, whether it's a small, mid, or a large cap ticket, doesn't matter. But what would be the ambient ratio if one were to look at it? Well, it varies from industry to industry. So when you say P ratio, market decides in its own wisdom, right or wrong, what P ratio to give to a particular industry. Okay. For instance, on an average, you see IT today, the average PE ratio the market would give to the best top leaders would be say 25, 30. All right. Right. But if you see consumption, some of the top name number is 80, 100 is crazy. Okay. It's not advisable. On the other hand, there are banks, and mind you, in banks, when you see the banks ratios, you should look at price to book ratio. At what kind of price, what is called PB. Fortunately, if you go to BSE Sensex site, BSE site or NSE site, all the details are given. Before you buy a company, before you buy a bank, see what is the PB. For instance, some of the private sector banks enjoy a PB of 3 times. But similar performing PSU bank, which were neglected for all these while, and suddenly they have been the darling of the market today. Yes. And now they have started getting a good PB, Absolutely. price to book value. But even today, some of the PBs or price to book ratio for the public sector banks remain very attractive. विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83 रुपये 14 पैसे पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में गिरावट के साथ 103.34 पर कारोबार कर रहा था। We are again slipping into a quick break. Do stay tuned in, for we are having lots and lots on the other side. अपने सुरक्षित भविष्य के साथ साथ वित्तीय स्थिरता के लिए भी एनपीएस पर भरोसा करें। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक
और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। अल्प विराम के बाद आपका स्वागत है। एशिया और यूरोप के बाजार का हाल जानते हैं। सभी प्रमुख एशियाई शेयर नुकसान के साथ बंद हुए। हांगकांग का हैंग सेंग 3.9% गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.5% लुढ़क गया और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 2.1% फिसल गया। सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.4% और जापान का निक्केई 0.4% गिर गया। दिन के कारोबार में यूरोपीय बाजार में भी गिरावट आई। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी 1.6% की गिरावट, फ्रांस का कैक 1.2% गिरावट के साथ, जबकि जर्मनी का डेक्स 1.1% नीचे कारोबार कर रहा था। प्रकाश जी, अभी यूएस का जो मार्केट है वहाँ भी गिरावट है, लेकिन विस्तार से बताएंगे हमारे सहयोगी निशित जी। तो देखिए, कहीं से भी अच्छी खबर नहीं आई। शेयर बाजार में आज एशिया, यूरोप, यूएस हर जगह पूरा ये रहा। ये क्या होता है कि आमतौर पर एक ट्रेंड चलता है। सुबह आप उठेंगे तो एशियन मार्केट खुलती है, तो जो इन्वेस्टर होता है, हम जैसे मैं खुद देख लेता हूँ आज मार्केट, एशियन मार्केट कैसे गई, तो कोई ना कोई रीज़न तो होता ही है। फिर आदमी देखता है क्या रीज़न है। जैसे आज, अब रीज़न जो आज जैसे बताया है, जो एशियन मार्केट है या यूरोपियन मार्केट है, जो अमेरिकन मार्केट है, तो ये यहाँ पे चाइना प्लस जियोपॉलिटिकल जो दो रीज़न हैं, इन सब मार्केट को इम्पैक्ट करी। तीसरा रीज़न जैसे इन्होंने बताया निशित जी ने, ये जो फेड का रेट्स है, जी। ये 3 रीज़न कंबाइन किए और मार्केट जो थी किसी ने कोई ना कोई बहाना भी ढूंढ रही थी करेक्ट करने का। कई बारी बहाने ढूंढती है ना, क्योंकि ज़्यादा जब हो गए तो सस्टेन भी तो करना है उसको। Absolutely. तो ये बहाना भी ढूंढ रही थी, वो अच्छा बहाना मिल गया। हालांकि सिचुएशन जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको मार्केट बड़ी तवज्जो देती। And now moving on to the US markets, the three major US indices ended lower yesterday following mixed earnings from Morgan Stanley and Goldman Sachs, exerting pressure on banks. Sell-offs in Boeing and Apple also weighed on the S&P 500. The Dow Jones Industrial Average fell 0.6% and S&P 500 slipped 0.4% and the Nasdaq Composite Index lost 0.2%. रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि भारत अगले कुछ वर्षों में भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। फिच ने भारत की दीर्घावधि वित्तीय मुद्रा इशूअर डिफॉल्ट रेटिंग BBB पर स्थिर रखी है। फिच में मार्च 2024 में समाप्त हो रहे वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6.9% वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है। पिछले वर्ष मई में फिच ने भारत की वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान व्यक्त किया था। वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। And in some other news, production-linked incentive PLI schemes witnessed over 1.03 lakh crore rupees of investment till November 2023, which has led to production sales of 8.61 lakh crore rupees and 6.78 lakhs direct and indirect employment generation. PLI schemes have witnessed exports surpassing 3.20 lakh crore rupees with significant contributions from sectors such as large-scale electronics manufacturing, pharmaceuticals, food processing and telecom and networking products. As on date, 746 applications have been approved in 14 sectors with expected investment of over 3 lakh crore rupees. 176 MSMEs are among the PLI beneficiaries in sectors such as bulk drugs, medical devices, pharma, telecom, white goods, food processing, textiles and drones. Several MSMEs are serving as investment partners or contract manufacturers for large corporates. Incentive amounts of around 4,415 crore disbursed under the PLI schemes for 8 sectors, that is large-scale electronic manufacturing, IT hardware, bulk drugs, medical devices, pharmaceuticals, telecom and networking products, food processing and drones components. And moving on to crude oil. The oil prices dropped around 2% today as economic growth in China, the world's second largest crude user, slightly missed the expectations. This raised concerns about future demand, while the strength of the US dollar diminished investors' risk appetite. In the intraday trade, Brent crude was trading 1.9% lower at $76.83 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was also trading 2% lower at $70.91 per barrel when reports last came in. Prakashji, where do you see the crude going, especially with the
with the things that we are witnessing in the Red Sea area and the Gulf countries and, of course, West Asia crisis? In fact, I'm surprised that you said that crude has dropped today. In a way, the situation, as per the situation, it was expected the other way around. Well, because it is now linked to China not growing as fast as they expected. Well, the situation in West Asia, if it spreads to the entire region, Absolutely, is not a good news for crude. And then we got to be on our watchful about it, because we have stakes in, especially. True. So let's hope that the situation doesn't really deteriorate from here on. But as for the information that is available today, the problem in the Red Sea, and it's not only crude, the entire freight rates have gone up. The supply chain is also getting impacted. Global supply chain I'm referring to. So to that extent, it's very difficult to say that which way the crude would head for. But if West Asia geopolitical situation does not improve, let's hope it improves, then we got to be more careful about and watchful about how crude behaves. All right. We talked about the PLI schemes, which witnessed 1.03 lakh crore rupees of investment in November 2023. Of course, it's a humongous data, as we can see. How do you see, sir, this spurt in this PLI? Well, the PLI overall has been a good kind of a catalyst for promoting investments, especially it's meant for manufacturing, boost to manufacturing, because India traditionally has been a service sector driven economy, and the government consciously wants to give a boost to manufacturing. So it's one of the incentives, and good thing is that companies are lapping it up, and it's also coinciding with a investment cycle where because of the consumption demand improvement over the last few years, now companies want to invest. So why not invest and take double benefit from the government, as also when there's a real requirement for business expansion. So to that extent, it's a good catalyst for an investment in manufacturing. सोना और चांदी का हाल जान लेते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोना फरवरी अनुबंध के लिए सपाट कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सोना 15 रुपये गिरकर 62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। मार्च अनुबंध के लिए चांदी भी 225 रुपये की गिरावट के साथ 71,847 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। वैश्विक बाजारों में दिन के कारोबार में अंतिम समाचार मिलने तक सोना कॉमेक्स पर $2,028 और 10 सेंट प्रति औंस की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी $22 और 94 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। We thank you, Prakash sir, for having joined in our studios and shed light on the day's development and, of course, the wider financial spectrum. Thank you so much, sir. You're most welcome. And before we close, a reminder of the headlines once again. Benchmark equity indices tumble over 2% amid negative global sentiments. Sensex plunges 1,628 points. Nifty finishes at 21,572. Fitch rating says India poised to remain one of the fastest growing economies in the world for the next few years, and production-linked incentive schemes witness over 1.03 lakh crore rupees of investment till November 2023. And that's it in this edition of Market Mantra. From the entire team here, it's goodbye. नमस्कार। जीवन में स्थिरता के साथ साथ एनपीएस आपको आर्थिक आजादी भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। Market Mantra.